अस्सलाम वालेकुम। सो बेटा द नेक्स्ट सब ग्रुप एनिमल किंगडम का आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। इट इज द आर्थ्रोपोडा। बेटा आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको इस तरह पता था, चलो ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा सब ग्रुप है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर। इज द लार्जेस्ट फाइलम, रादर आई कैन से जो एनिमल है सारा उसका टू थर्ड ऑफ द एनिमल्स दैट वी हैव दे ऑल बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा। तो वो खुद ही समझ आ सकता है कि आर्थ्रोपोडा कितना बड़ा फाइला है कि 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स दैट वी नो दे ऑल आर द आर्थ्रोपोडा। फाइन, मेरे बच्चे, द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट आर्थ्रोपोडा इज दैट आर्थ्रोपोडा हैज जॉइंटेड appendages. I will make you understand this. मेरे बेटे, this is my body. This is a head, this is a neck, this is thorax, this is abdomen, and then we have the legs. मेरे बेटे, जो ये बाजू है, जो बॉडी के साइड में है, इनको हम appendages कहते हैं। बाजू, टांगे, these are appendages. बेटा अगर आप देखोगे इस appendage के अंदर, इस एक्सटेंशन के अंदर, जो बॉडी की एक्सटेंशन है, इसके अंदर यहां पे एक जॉइंट है, यहां पे एक जॉइंट है, यहां पे जॉइंट्स है, joints, joints, joints and joints। ऐसे appendage को जहां पे joints हो हम कहते हैं बेटा jointed appendages। समझ रहे बेटे? By saying jointed appendages, I mean to say आर्थ्रोपोडा ही पहला वो सब ग्रुप था जहां appendage के अंदर joints आ गए, joints आ गए। इसीलिए बेटा आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। आर्थ का मतलब बेटे joint, आर्थ का मतलब joint, and poda का मतलब बेटा appendage. So बेटा, if anyone asks you why we call arthropoda as arthropoda, tell the guy it's actually two words. One is arth. Arth means joint and poda means appendage. The arthropoda was the first phylum where the appendage, these appendages, there had the joints. इससे पहले जो ग्रुप थे वहां पे joints नहीं थे। So मेरे बेटे arthropoda have the jointed appendage, rather is the first subgroup having the jointed appendage. मेरे बेटे, the next point about arthropoda is that it show organ system level of organization, and then मेरे बेटे I have discussed it in previous lectures where I told you in organ system level of organization the organs interact with each other. For example, we have the heart an organ, we have the kidney the organ. If heart and kidney are interacting, if heart and brain, the two organs are interacting, such type of body system we call as organ system level of organization. LOO means level of organization. The next point about the arthropoda is that it shows bilateral symmetry, and then we know what is the bilateral symmetry, where the body can be divided into two equal halves but only one plane. जैसे हम इंसान हैं, हमें दो इक्वल हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन जो आरी आपको लानी है वो इस तरह लानी है, एक आरी, यानी एक ऐसी सिमेट्री जो बस एक प्लेन से डिवाइड हो जाए। मेरे बेटे, we call that as bilateral symmetry, and in the arthropoda, yes, there is the bilateral symmetry. Important point about मेरा बेटा arthropoda. The next important point about arthropoda beta is it is triploblast. We know we've been discussing this triploblast from day one of discussing the animal kingdom, where I told you it has three cell layers: the ectoderm, the mesoderm, and the endoderm. The cell, and the cell. And the other point, it is true coelom. We know what is a true coelom. What is a true coelom? Is that triploblast where, yes, in the mesoderm, yes, fluid accumulates, but in such a way that outside that fluid is a mesoderm, and on inner side of that fluid again is the mesoderm. So, the arthropoda is not a pseudocoelom. We know the pseudocoelom. We know the pseudocoelom, but the arthropoda is not pseudocoelom, it's true coelomate. Fine. So the next point about arthropoda is that arthropoda has exoskeleton. Arthropoda has exoskeleton. What is exoskeleton? We know. अगर एक skeleton बेटा अंदर से होगा,
यानी इनसाइड द बॉडी होगा, उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। अगर एक स्केलेटन बाहर से होगा, जैसे हमारे नेल्स है बेटा, इस नेल को हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये बाहर से है। सो मेरे बेटे जो आर्थ्रोपोडा है, हाँ जी, इसके पास स्केलेटन है, और जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है, बाहर से स्केलेटन है। और वो किस चीज का बना है? वो एक सब्सटेंस, एक कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसैकेराइड का बना बेटे, जिसका नाम काइटिन है। सो मेरे बेटे, इफ एनीवन आस्क्स यू elaborate or discuss the skeleton of arthropoda, you tell that guy or that individual that the arthropoda has skeleton, but it is not endoskeleton, it is exoskeleton, and that too, that exoskeleton is made of a compound known as the chitin. Fine? The next important point about the arthropoda is that in arthropoda body, जिसकी body है बेटे, it has head, thorax and abdomen. देखो बेटा, जैसे हम इंसान हैं, हमारे पास हेड है, नेक है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मेरे बेटे सिमिलरली आर्थ्रोपोडा की बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखो बेटा, ये जो सबसे पहला पार्ट है, दिस हेड, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दिस इज थोरैक्स, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, दैट्स एब्डोमेन। सो मेरे बेटे, इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स in the arthropoda, मेरे बेटे, tell the guy straight that there are 3 body parts in the arthropoda. One is the first part known as the head, then is thorax, and then मेरे बेटे is the abdomen. Fine? The next point मेरे बेटा about arthropoda is, I tell you like this. बेटा, अगर आपको पता होगा, we humans breathe in and breathe out. We respire with the help of lungs. Similarly, my bete, arthropoda also inhale and exhale, also breathes in and breathes out, but it has 3 organs which help it in doing this function. The organ can be book lung. हमारे पास लंग है, इसके पास लंग नहीं, इसके पास और एक ऑर्गन जिसका नाम बुक लंग, या मेरे बेटे इसके पास बुक गिल होगा, या मेरे बेटे इसके पास ट्रैकियल सिस्टम होगा। सो मेरे बेटे, if we human breathes in and breathe out by lungs, the arthropoda also breathe and breathe out, but via 3 structures. It can be बुक लंग, या तो बुक लंग होगा, या मेरे बेटे कुछ आर्थ्रोपोडा के पास बुक गिल होगा, या कुछ आर्थ्रोपोडा के पास मेरे बेटे ट्रैकियल सिस्टम होगा। That is about the respiration. मेरे बेटे, the next point about the arthropoda is that it shows open circulatory system. I have discussed that in the circulatory system. Why I told you in open circulatory system, the blood does not flow through blood vessels. If the blood flows through the blood vessels, that is known as closed type of circulatory system. We have discussed that already. Anyway, मेरे बेटे, it has a structure known as Malpighian tubules. मैं स्पेलिंग बोलूंगा बेटा आपको, Malpighian, Malpighian tubules, tubules. और मेरे बेटे, about this Malpighian tubules, the function of this Malpighian tubule is that it helps us in excretion. जैसे हमारे पास किडनी है मेरे बेटे, similarly in arthropoda उसके पास किडनी नहीं, उसके पास मेरा बेटा Malpighian tubule होता है। मेरा बेटा, the next important point about arthropoda is that in arthropoda there are sensory organs. देखो बेटा, हम इंसान के पास भी सेंसरी ऑर्गन्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारी टंग जो टेस्ट करती है एक सेंसरी ऑर्गन है, हमारी नाक जो स्मेल परसीव करती है एक सेंसरी ऑर्गन है, हमारे कान जो आवाज सुनते हैं एक सेंसरी ऑर्गन है। सिमिलरली मेरे बेटे, इन आर्थ्रोपोडा देयर आर आल्सो द सेंसरी ऑर्गन्स। और कौन कौन है बेटे? द ऑर्गन्स आर एंटेना, द आईज और स्टैटोसिस्टस। So मेरे बेटे, if we humans have the tongue, the nose, the eyes, the ears, the arthropoda, yes, they also have the sensory organs. लेकिन कौन कौन मेरे बेटा? It can be antenna, it can be eyes, it can be statocyst. मेरे बेटे, the next point about the arthropoda is that is dioecious. And then you know मेरे बेटे what is a dioecious? Such a condition where
a single individual cannot produce both sperm and ova, but two different organisms, two different individuals produce the sperm and other organisms produce the ova. Fine. So it is dioecious. And then it shows internal fertilization. We know what is the internal fertilization, why the sperm and the ova they fuse, but within the body. And then is that it shows ovipary, rather it's oviparous. But आपको पता होगा, आपने बचपन से सुना होगा viviparous और oviparous. Viviparous में where a female give birth to a young one, while as in oviparous वहां पे अंडा दिया जाता है. Then that egg develops into the like child. So मेरे बेटे जो arthropoda है ये oviparous है. By saying oviparous I mean to say it is egg laying organism. So मेरे बेटे that is about the arthropoda. अब यहाँ पे एक चीज अभी बचता है about arthropoda, वो है बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. मेरे बेटे जो एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा के वो बहुत सारे हैं. एनसीईआरटी ने वो सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं. जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है हनी बी लिखा है, बॉम्बिक्स लिखा है, लोकस्ट लिखा है, इसको क्या कहते हैं किंग क्रैब लिखा है, लिमोलेस लिखा है. सो मेरे बेटे वो सारे एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से देखोगे, वहां उसने बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिखी है. एनोफील लिखा है, जोलेक्स लिखा है, ईडीज लिखा है. मेरे बेटे वो सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से आप देखेंगे और वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे. मेरे बेटे दैट इज अबाउट द आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट animal kingdom phylum having about 2/3 of the animals that we know.